Hello lovely friends, this is Rita and very welcome again to our YouTube channel. And here we are going to see 10 minutes yoga poses for cold and cough. So let's get started. Easy pose. Sit calmly by folding your legs and closing your eyes and chant Om. Alternate nasal breathing. After easy pose, with the help of your thumb and index finger, inhale and exhale one by one. इजी पोज के बाद दोनों अपने थंब फिंगर और इंडेक्स फिंगर की हेल्प से एक एक करके सांस लें और छोड़ें. रिपीट दिस विथ योर अनदर हैंड ऑल्सो. इसी क्रिया को दूसरे हाथ से भी दोहराएं. डू दिस पोज 2 to 3 times from both the hands. इसी आसन को दोनों हाथों से 2 से 3 बार दोहराएं. एंड रिलैक्स योर माइंड. खुद को रिलैक्स करें. Child pose. By folding your legs and sitting on them, bend forward your body and touch with mat. बाल आसन. अपने पैरों को मोड़ें और उस पर बैठे हुए अपने आधे धड़ को आगे की साइड मोड़ें. Downward facing dog. After child pose, take your body upward side by making triangle pose and see your legs. अधोमुख श्वान आसन. बाल आसन के बाद अपने शरीर को त्रिकोण जैसा बनाएं. Camel pose. Sit on your knees and bend backward your body and touch your both the hands with your knees. उष्ट्र आसन. अपने घुटनों पर बैठें और अपने आधे धड़ को पीछे के साइड झुकाते हुए दोनों हाथों से अपने एड़ियों को टच करें. Warrior one pose. Make triangle pose and take your both the legs in one direction by joining your hands. Repeat this with another side also. वीरभद्रासन. अपने दोनों पैरों को ट्रायंगल पोज में बना के एक साइड करें और अपने दोनों हाथों को ऊपर की साइड ज्वाइन करें. Shoulder stand. Lie on mat and take your lower body on upper side with the help of your both the hands. Straight your legs. सलंबा सर्वंग आसन. चटाई पर लेट जाएं. अपने निचले धड़ को ऊपर की साइड करें अपने दोनों हाथों की मदद से. Plow pose. After shoulder pose, take your both the legs behind your head. Touch with mat. हल आसन. सलंबा सर्वंग आसन के बाद अपने दोनों पैरों को सर की साइड चटाई से टच करें. रिपीट दिस 2 to 3 times. इसी क्रिया को 2 से 3 बार दोहराएं. शोल्डर स्टैंड. फिर प्लो पोज. सलंबा सर्वंग आसन. फिर हल आसन. ये बहुत ही हेल्पफुल है फॉर योर लंग्स. इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर लंग्स. Wheel pose. Lie on mat and with the help of your both the hands and legs, take your middle body on upper side.
चक्रासन, चटाई पर लेट जाएं और अपने दोनों हाथों और पैरों की हेल्प से अपने बीच वाले धड़ को ऊपर की साइड करें। रिपीट चाइल्ड पोज, बाल आसन को दोहराएं। यह आपको रिलैक्स करेगा। इट विल रिलैक्स योर माइंड विच अल्टीमेटली हेल्प्स टू रिड्यूस कोल्ड एंड कफ। इट नॉट ओनली रिलैक्स योर बॉडी, in fact stretches your knees, thighs and also helps in blood circulation. Headstand, Sir Asan. With the help of your both the hands, take your lower body on upper side and try to straighten it. But if you are beginner, with the help of your both the hands, try one by one. Take one leg on upper side. अपने दोनों हाथों की मदद से अपने दोनों पैरों को ऊपर की साइड करें। लेकिन अगर आप अभी स्टार्टिंग में हैं तो एक एक करके करें। एक पैर को पहले करें, फिर एक दूसरे को करें और धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर की साइड करें। रिपीट कैमल पोज, उष्ट्रासन को दोहराएं। It will stretches your upper body and helps for breathing. Bow pose, lie on mat on stomach side and catch your both the legs with your hands and stretch your stomach. धनुरासन, पेट की साइड चटाई पर लेट जाएं और अपने दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़ें। Forward bend pose, stand straight and bend forward your half body and touch your nose with your knees. Uttanasana. Bridge pose, lie on mat, touch your shoulder on mat but take lower body on upward side and touch your both the hands with your legs. सेतु बंद सर्वांग आसन, चटाई पर लेट जाएं और अपने शोल्डर को चटाई से टच करें और लोअर बॉडी को ऊपर की साइड करें। अपने दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों को टच करें। Seated forward bend pose, sit on mat and bend forward your upper body and touch your both the hands with your legs. पश्चिमोत्तासन, चटाई पर बैठ जाएं और अपने अपर बॉडी को बेंड करें। Do this with your one leg also. इसी क्रिया को एक पैर के साथ भी करें। Repeat with your another leg also. दूसरे पैर के साथ भी दोहराएं। Repeat child pose.
बालासन को दोहराएं। रिपीट बो पोज। चक्रासन को दोहराएं। It will stretch on your upper body. Spine X, लंबा भुजंग आसन. Lie on mat and take your half body on upper side. Bend it. चटाई पर लेट जाएं और अपने ऊपरी धड़ को आधा मोड़ें. It will relax your whole body. यह आपको बहुत शांति प्रदान करेगा. कॉपस पोज, शव आसन. चटाई पर लेट जाएं. लाई ऑन मैट एंड ब्रीथ. इनहेल एक्सेल. सांस लें अंदर बाहर. इट विल रिलैक्स योर होल बॉडी. Easy pose. After relaxing your body, relax your mind also. Chant Om. Om. You can also do it when you are normal without any restriction. Now the time to say bye. Take care. Meet you in next video. Till that, keep smiling and spread happiness.